Hello and welcome to UPSC Scholar. Today we'll be discussing the current affairs from 3rd of July to 9th of July. We'll be covering it from Indian Express newspaper and we'll be looking at it only from the UPSC perspective. So let's begin. My name is Sachin. Our first current affairs are from Polity. Our own very premium trains, a marquee train Vande Bharat Express is in news again. Recently what happened was our Prime Minister launched trains in Madhya Pradesh, in Bihar routes. And then after a few weeks, the news portals reported that a very few occupancy has been reported in those trains. Not much people are traveling it as compared to the other routes like Mumbai to Pune, Mumbai to Ahmedabad, Delhi to Katra. So these are very busy routes for Vande Bharat Express and they are showing a very positive response as compared to these routes recently that were launched in Madhya Pradesh and Bihar. So what happened was Railways now has offered up to 25% discount in the Vande Bharat seats. Recently it has happened due to the low occupancy that has been reported. So इसकी मेन वजह क्या है जो हम इसको एक्सप्लोर करेंगे and why it has happened. The first reason is obviously the policy uncertainty. First, when you launched the Vande Bharat Express, the train, although we all know that the tickets are quite on a higher side, slightly on a higher side as compared to the normal trains that we travel in. But just because Vande Bharat offers a very high quality services along with it, so the government has justified the tickets rate. But now it has again offered a 25% discount on the seats of Vande Bharat train. So this also shows the lack of ground level knowledge that the government had put it on because जो मुंबई टू पुणे रूट है वो एक बार को हम कह सकते हैं कि that is more of a corporate route and more of a I would say कि higher job class people move on to that route as compared to Madhya Pradesh, Bihar. Not that much of a it is a very industrial area, so not that much of a people. Mostly, or they are laborers, they are workers, and often are middle class people. So that is not as economically viable for the government. So government should have noted the economic viability of that route also. So now what are the good effects that it is going to happen, the discount that has been offered? It will make train travel cheaper for sure. We will be getting those elite, those premium services at a lesser rate, and this will also be a promotion of made in India product that has been made. This Vande Bharat train has been totally made in India only. So ये इसका भी promotion होगा. तो इस वजह से government is promoting it very frequently, very strongly. So that's why government has offered to take a step back and offer a discount. Okay. So next thing, there was this news article on the Indian Express recently that catched my eye that जब गलवान इंसिडेंट हुआ था जिसमें हमारे सोल्जर्स की बहुत सारे सोल्जर्स डेथ हुई थी तो उसमें उसके बाद जो हमारे इंडियन सेंटिमेंट्स थे देवर कि भाई हम मेड इन इंडिया प्रमोट करेंगे वी विल बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट्स these all things were trending huh? But recently this article what it is saying कि even after that much the backlash and the anti-Beijing stance of the government the BSNL का एक बहुत ही crucial backend project था of signals and this call data records that was allocated to a Chinese firm ZTE. So this was a I would say internal security lapse or whatever क्योंकि उस वक्त नहीं अभी भी India has a anti-Beijing stance in businesses and they promote make in India products. So that is why I would say कि BSNL जैसी crucial जो हमारा टेलीकॉम सेक्टर है जो कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर कहती है गवर्नमेंट वहां पर भी हमने चाइना के प्रोडक्ट चाइना की कंपनी को ये टेंडर एलोकेट करा सो दिस इज क्वाइट कंसर्निंग एंड दिस इज अ concern for our internal security also as well as national security also. BSNL is very crucial for us because no corporate sector like Vodafone or Reliance Jio they don't offer services in Vodafone in border areas or in left-wing extremism areas. But government के officers, government की army, everybody is posted in border areas and left-wing extremism areas. So they need telecommunication. They need this communication lines. So that's why BSNL is always there. So
the thing is that needs to be asked to the government that telecom जो कि आप कहते हैं कि इतना strategic sector है उसके बावजूद इस डील को कैंसिल क्यों नहीं करा गया एंड दिस डील वाज totally going on and it was not at all terminated till its completion. We all have seen BSNL was recently given a huge package from the central government again. So this shows how crucial BSNL is. And one more thing to be noted is आपने उस वक्त TikTok बैन करा, आपने PUBG बैन करा. All the things that were the data that was going to the Chinese सर्वर्स और द चाइना कंट्री एज अ कंट्री वो आप सब ने बैन करा लेकिन बीएसएनएल जैसे टेलीकॉम क्रूशियल सेक्टर में जो ये डील थी दैट वेंट टोटली अननोटिस्ड बाय द गवर्नमेंट so this is a thing quite concerning for our national security and our internal security also. This was the article and we don't know how this deal got through. Next thing, there is one more faction that has been divided in Maharashtra. The last year that was Shiv Sena that had a similar fate and it was ultimately divided into two factions, Uddhav Thackeray Shiv Sena and this uh, uh, Shinde Good Sena. And ultimately the Shinde Shiv Sena was also allotted the bow and arrow symbol by the ECI. Same thing is happening to NCP now. These two factions that have been separated are this Ajit Pawar faction and then there is the Sharad Pawar section that have been totally divided as of now. And this Ajit Pawar section have also gone to ECI to approach to get this symbol and the party name. So we all know what's the procedure for that. ECI का क्या प्रोसीजर होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखता है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन को देखता है, आपकी पार्टी के और आपकी जो एमएलए एमपीस का सपोर्ट है आपके पास वो कितना है वो सब देखता है और उसके बाद सिंबल अलॉट होता है. So this is the thing that is being looked upon. So one more thing that is a quite a concerning thing that we all must think is he get 10th schedule. Is it so much ineffective that the MLAs are not fearing it? जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है has it become so redundant that people are not fearing it? Why people are not fearing it? And in last 3 4 years it has been very much prevalent that MLAs in such huge quantities are leaving the parties and shifting to another parties. So this is thing quite concerning that we all must be thinking. So if there would be any update I'll be updating it, but अभी तक के लिए सिर्फ इतनी ही न्यूज़ थी. द स्ट्रे कैटल इशू, अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में रहते हैं और सेंट्रल इंडिया में रहते हैं तो ये काफ़ी प्रेवलेंट इशू है. आपने देखा होगा कि रोड्स में इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ एक्सीडेंट. जो स्ट्रे कैटल घूमते रहते हैं they are just left free by their owners because they are no more yielding milk or the whatever the livestock just has been released by their owners because it is no more useful for them. So now government, it is a very quite a big issue for the parties here. It is also a very major election issue because these stray cattle, what they do is they damage the crop, they especially the fruit crop at at the farms of the farmers. So what the government has come up with recently, उससे पहले भी काफी steps लिए गए थे कि stray cattle सेंचुरी बनाने का इन्होंने एक डिसीजन लिया था but that didn't came into the light. But now they have come with the solar fencing scheme. What would be happening is कि जो खेत होंगे उनके साइडों में this solar wires would be just put it on placed on और उसमें इनफ लेवल ऑफ करंट पास करा जाएगा जिससे कि स्प्रे केटल भी दूर रहे, उसको हार्म भी ना हो और वो दूर भी रहे. एंड इट वुड बी नॉट हार्मफुल फॉर द इफ बाय मिस्टेक कोई अगर इंसान भी उसमें हो जाता तो इट वुड नॉट बी दैट मच हार्मफुल. So this all there would be no need of electricity. It will all be charged by solar energy. एंड बार्ब्ड वायर जो होता है जो कांटों वाला तार होता है जो कि बॉर्डर्स में लगता है दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज बैंड बाय द गवर्नमेंट बिकॉज वहां पर काफी कुछ एक ऐसे केसेस हुए थे जिसमें एनिमल्स हर्ट हो गए थे और उनकी वहीं पे डेथ हो गई थी. तो इस वजह से बार्ब्ड वायर्स आर नॉट अलाउड. तो अब एक न्यू स्कीम के साथ गवर्नमेंट आई है. इट इज बीइंग सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड इन राजस्थान and now it is being implemented in UP and more northern states if it is successful.
सो इसमें अगर कुछ और अपडेट होगी तो आई विल अपडेट इट नेक्स्ट टाइम. So next thing is economy. So there's this news that government has bring the GST network under PMLA Ambit. What is PMLA? Prevention of Money Laundering Act. Let's get into the basics first and then I will tell you the news. GST recently celebrated its 6th anniversary. It was implemented on the 1st July 2017. And इससे क्या होगा कि जीएसटी और जो पीएमएलए है उसके एम्बिट में आ जाएगा. अगर जीएसटी के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज हो रही होंगी तो इट वुड बी ट्रैक्ड एंड ईडी विल नाउ आल्सो बी गेटिंग द डेटा ऑफ जीएसटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज दैट इज वट एवर दैट इज हैपनिंग, है ना. ईडी के थोड़े से अगर हम स्टैटिक पार्ट रिवाइज करें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. And one more important detail is that ED investigates only two types of cases: Prevention of Money Laundering Act and Foreign Exchange Management Act 1999, PMLA 2002. है ना. So what will be happening right now is जो GSTN है और जो ED का डेटा है they would be just interflowing between each other. जीएसटीएन का डेटा ईडी को शेयर होगा, ईडी का डेटा जीएसटीएन को शेयर होगा, है ना. इसकी नीड क्यों हुई? जो कि जो जीएसटी फ्रॉड हो रहे थे, फेक रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, तो what ED will be doing is it can help judge GST to find the original beneficiary of fraud और जो ओरिजिनल सोर्स है फ्रॉड का. कहीं इसका बहुत बड़ा नेटवर्क तो नहीं है. if such a network is being placed and which is doing such level of frauds, so ED can help the GST network. So this is the news that has come under the PMLA network, PMLA Ambit. Although GSTN network shares its data with more investigating agencies also, like many more, like Competition Commission of India, National Investigation Agency, already Serious Fraud Investigation Office. So these all are the investigation agencies with which GSTN shares the data. But now the PMLA and the ED are the new parties. Next thing, the Rupee challenge. Recently, what happened was RBI published this paper, a roadmap for internationalization of rupee. तो इसका मेन पर्पस क्या था कि जो यूसेज रूपी का यूसेज है वो ग्लोबली बढ़े, ट्रेड पर्पसेस के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए, या इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द करेंसी हो. मतलब हम बहुत सारा जो हम जो ट्रेड करते हैं वो डॉलर में करते हैं, लेकिन जो रुपी है वो ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी बने. इसके लिए आरबीआई ने एक पेपर निकाला हुआ था. तो पहले हम देखते हैं इसकी नीड क्या पड़ी. इसकी नीड इसलिए पड़ी जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो वी वर एक्सपोज टू द जो हमारी एक एक्सेस रिलायंस है ऑन डॉलर, हमारी नहीं पूरे वर्ल्ड की, बिकॉज इट्स अ ग्लोबल करेंसी द डॉलर. तो इस वजह से ये हुआ कि हम सब डॉलर पे डिपेंडेंट थे. करेंसीज के हमारी करेंसी के प्राइस में बहुत फ्लक्चुएशन आया बिकॉज वी ऑल वर डिपेंडेंट ऑन डॉलर. सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस कि जो ये एक्सचेंज रेट है इससे हमारा एक्सचेंज रेट का रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाएगा. स्टेबिलिटी आएगी रुपी के प्राइसेस में एंड इट विल आल्सो हेल्प अवर एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स. जो एक एबनॉर्मेलिटी चल रही थी, कभी एक्सपोर्टर्स को फायदा हो रहा था, कभी इंपोर्टर्स को फायदा हो रहा था, तो इस वजह से एक फ्लक्चुएशंस कम होंगे. हम लेस रिलाई करेंगे फॉरेक्स रिजर्व पे. फॉरेक्स रिजर्व का मेन पर्पस क्या होता है कि जो जो होते हैं उन डॉलर को स्टोर करते हैं, फॉरेन करेंसी को स्टोर करते हैं, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन इट फॉर पेमेंट्स ऑफ अवर क्रूड ऑयल्स. जो भी हम इंपोर्ट करते हैं उसकी पेमेंट हम फॉरेक्स रिजर्व अगर हमारे पास सफिशिएंट होंगे तो हम तभी कर पाएंगे. सो दिस इज इट. देन द नेक्स्ट थिंग इज इसके लिए हम क्या कर सकते हैं. रुपी को अगर हम इंटरनेशनलाइज करना है तो हमें क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे. तो पहला स्टेप इज द सेटलमेंट ऑफ जो ट्रेड्स हम कर रहे हैं किसी के भी साथ. हम जो भी किसी भी कंट्री के साथ सेटलमेंट कर रहे हैं तो उनसे इन्वॉइसिंग भी करें, उनके साथ पेमेंट भी, सेटलमेंट भी, सब कुछ रुपी में करें. एक ऐसा सीमलेस ट्रांजैक्शन का पोर्टल बनाए, कुछ भी एक ऐसा सिस्टम बनाए कि रुपी ऑटोमेटिकली वहां पर एक सीमलेस, एक मतलब इंटरऑपरेबिलिटी बने जिससे कि इजीली रुपी ट्रांसफर हो सके दूसरी कंट्रीज में भी. Exporters should be incentivized to use more rupees, है ना. One more thing that we can do is we can include the rupee in IMF SDR list. जो IMF की SDR बास्केट होती है उसमें डॉलर होता है,
यूरो होता है, पाउंड होता है। तो इस वजह से हम हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि रुपी को ग्लोबल रिकग्निशन मिले और ये एसडीआर लिस्ट में आए। बट रिसेंटली देयर वर सम एप्रीहेंशंस आल्सो। जो रशिया था, व्हाट आर द चैलेंजेस? तो रशिया जो था, हमने उससे बहुत रिकॉर्ड ऑयल इंपोर्ट करा ड्यू टू द डिस्काउंट्स ऑफर्ड। बट जो अभी ऐसा रिपोर्ट्स कुछ निकल के आ रही थी, उसमें ऐसा था कि रशिया ने पेमेंट लेना युआन में और दिरहम में ज़्यादा अच्छा समझा एज कम्पेयर टू रुपी। वाई? बिकॉज रशिया इम्पोर्ट्स वेरी लेस फ्रॉम इंडिया, तो उनकी इतनी यूटिलिटी नहीं है इंडिया में। तो इस वजह से हमें एक्सपोर्ट्स भी इंसेंटिवाइज करने हैं। और इस वजह से रशिया ने अभी तक ऐसा आ रहा है कि वी कुड हैव मेड, ऑल्दो इट इज नॉट ऑफिशियली एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट, बट वी वी could have paid in yuans. So, and one more risk that we are going to be exposed is there would be more exchange rate volatility. What would be happening is कि सपोज जैसे डॉलर है, तो एंड युआन है, तो वी ऑल हैव लिसन दिस चाइना और यूएस की जो ट्रेड वॉर्स होती हैं, चाइना डेलिबरेटली डिवैल्यूज इट्स ओन करेंसी ताकि कि उसके एक्सपोर्टर्स को फायदा हो और इट कैन इंक्रीज इट फॉरेक्स रिजर्व्स मोर। तो यूएस जस्ट एलिजिस द चाइना कि भाई चाइना डेलिबरेटली डू दिस। तो इस वजह से हमारे साथ भी चैलेंज हो सकता है कि कोई हमारा जो एनिमी नेशन है या कोई भी इकोनॉमिकली जो हमसे पावरफुल नेशन है वो हमारे रुपी के साथ खेल सकता है। So this is it. Next thing was again RBI. What it did was कि it has issued a guideline for banks, which are the card issuers, to give options for customer to select the card networks, especially in the credit card. We all know, I think credit card बताने की जरूरत नहीं है। इसके कुछ नेटवर्क्स होते हैं, जैसे वीजा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, रुपे हो गया, अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया। And recently in India, the after especially after COVID, the use of credit card has increased many folds. Year on year basis, the total debt is around 2 lakh crore rupees, which is huge. So why does credit cards are so popular? The first thing is they offer this reward points and this all thing. And one more thing is they offer us these services like free lounge access in airports, free food, etc. So a lot of people are attracted to these things. So that's why they take credit card. What are the guidelines to be specific? कि कार्ड इशूअर्स को एक ऑप्शन प्रोवाइड करना होगा कस्टमर्स को कि वो इन इन जो नेटवर्क्स हैं, और भी कोई हो सकते हैं इन, लेकिन ये प्राइमरली इंडिया के कुछ मेजर नेटवर्क्स हैं, कार्ड इशूअर्स नेटवर्क। तो इनमें से कस्टमर के पास ये चॉइस होनी चाहिए कि वो कोई सा भी नेटवर्क इसमें से चूज कर सकता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये मैंने भी फेस करा है अपनी बैंक्स में, कि बैंक्स डेलिबरेटली आपको इम्पोज करते हैं कि भाई आप सिर्फ वीजा का ही क्रेडिट कार्ड लो, वीजा का ही डेबिट कार्ड लो, हम रुपए का नहीं देंगे, बिकॉज दे आर इनटू सम काइंड ऑफ पार्टनरशिप और कुछ अरेंजमेंट या कुछ कमीशन उनका फिक्स होता होगा, आई डोंट नो। बट दे इम्पोज यू कि आप इसी बैंक का लीजिए, इसी कार्ड नेटवर्क का लीजिए। तो इस वजह से, एंड वन मोर थिंग इज आरबीआई हैज आल्सो सेट द बैंक्स टू पार्टनर विथ मोर कार्ड नेटवर्क्स, ताकि एक कस्टमर को एक ऑप्शंस मिले, बहुत सारे ऑप्शन चॉइसेस मिले और उसमें से वो किसी भी चीज को चूज कर सके। So this was the news. Next thing, it is from IR. So BRICS, as we all know, the expansion of BRICS is in news since last 6-7 months. And first, let's look at the statics. BRICS was established in 2009. It has its very own multilateral banking institution called as New Development Bank. Its headquarters are in Shanghai, China. And what is it? चाइना की यहाँ पर शेयर भी बहुत ज़्यादा है। It consists of 40% of world's population and 20% of global GDP. So it is quite an influential group. These are the partners. These are the new countries that want to join: Saudi, Indonesia, UAE, Egypt, Argentina. तो ये बेसिकली क्या है कि चाइना, जिसका काफी इन्फ्लुएंस है इस ग्रुप में, बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन दिस ग्रुप। तो इस वजह से क्या है कि they want to add this, and China wants to use this group as a counter to G7, क्योंकि G7 में जो वेस्टर्न कंट्रीज का अलायंस है उसके खिलाफ हम ब्रिक्स को एज अ यूज करना चाहता है चाइना। बट देयर आर सम apprehensions also. I have made a note here.
कि ब्रिक्स जो है हम सभी को पता है इमर्जिंग इकोनॉमीज है। चाइना वांट्स टू एक्सपेंड द ब्रिक्स एंड वांट्स इट टू, जैसे मैंने बताया कि इट वांट्स टू इमर्ज इट एज अ फोर्स अगेंस्ट वेस्टर्न कंट्रीज। न्यू कंट्रीज दैट वांट टू बी एडेड आर ईरान, अर्जेंटीना, ठीक है। दिस एक्सपेंशन वांट टू बी एज अ काउंटर एज G7 एंड G20। मगर इंडिया जो है, इंडिया यहाँ पे थोड़ा सा एप्रीहेंसिव है। इंडिया डज नॉट वांट टू बी इन अ वेरी एंटी यूएस ब्लॉक और एज अ ब्लॉक जिसमें कि चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो। तो इंडिया माइट स्टोन वॉल दिस प्रोसेस इफ इंडिया से नो, एक्सपेंशन कांट कंटिन्यू बिकॉज जब तक कि सारे मेंबर्स का हाँ नहीं आएगा, जैसे कि नेटो में होता है, जब तक कि सारे मेंबर्स का हाँ नहीं आएगा, जैसे रिसेंटली हो रहा है ना, टर्की ने अभी तक स्वीडन के लिए हाँ नहीं कहा है, फिनलैंड के लिए कह दिया है, तो फिनलैंड हैज बीन included in NATO, but Sweden still discussions are going on between Turkey and Sweden because Turkey is the only member that is stopping it. तो सेम यहीं पर है ब्रिक्स में कि if India say no, expansion can't continue. We all have recently seen India US relations are at an all time high. तो इंडिया ऑब्वियस सी बात है कि सोचेगा कुछ भी हाँ कहने से पहले, कि किसी भी नए मेंबर को ऐड करने से पहले। सो बट कैन इंडिया से नो? All the new additions are the key partners of India. Saudi oil. These are major oil partners and major trade partners. So if we say yes, it would lead to more China's imposition on the group with its more share in the total GDP of BRICS. It will increase the China's influence. So it is quite a tricky situation. But let's see what our governments see and takes the step. But जहाँ तक की है कि जो एक केप टाउन में समिट होने वाली है अगस्त में, इन सबको मेरे ख्याल से ऑफिशियली इंक्लूड करा जाने वाला है ब्रिक्स में। So let's see what happens, and if there is any update, I will surely update it to you next time. Next thing is the birth rate in Singapore have fallen to record low despite government incentives. This is a very common phenomena that is happening. A lot of Scandinavian nations are also suffering from this. China is also suffering from this. Recently, we passed China in the total population, and now we are the world's most populous country. Why? Because the total fertility rate of China fell drastically, and our was constant at 2.01. So that's why we surpassed China. So Singapore, basic हमें पता ही है, Singapore is our largest FDI partner in India. ज़्यादा से ज़्यादा जो FDI आती है इंडिया में वो सिंगापुर से ही आती है। What happened in Singapore is जो total fertility rate है, it reached to 1.05। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि एक फीमेल के द्वारा एक एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने बॉर्न होंगे, तो इट हैज रीच्ड 1, कि अराउंड एवरी वुमेन इन सिंगापुर माइट जस्ट ईल्ड 1 बेबी। सो दिस इज इट, व्हाई इज इट अ कंसर्न? द मीडियन एज ऑफ फर्स्ट टाइम मदर्स इज अराउंड 32। सो लोग थोड़ा सा अब चिल्ड्रंस को कम कर रहे हैं, और government has given a lot of cash grants and concessions to the couples. What are the major reasons behind it? तो एज अ गवर्नमेंट को लगता है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ रही है, और मेंबर्स जो हैं, ओल्डर मेंबर्स हैं, उनकी भी वो भी बढ़ रहे हैं फैमिली में। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि ओल्डर फैमिली मेंबर्स की भी केयर करनी है, चिल्ड्रंस की भी केयर करनी है, तो इस वजह से पीपल आर गोइंग फॉर लेस चिल्ड्रंस। And also there has been a lot of job insecurity in the world after COVID, since there are these wars going on. So there is also a sense of insecurity between the people. So that's why also they are not embracing more children. This might be the reason. Next thing is India has set up its first ever IIT campus outside India, and that is in Tanzania, Zanzibar. And it is the campus of IIT Madras. आप अगर वहाँ से कोई भी पढ़ेगा तो उसे IIT मद्रास की डिग्री मिलेगी। It will help in expanding the international footprint of IIT and enhance the India's reputation globally in the education sector also. So recently कुछ और proposals are in the line। IIT दिल्ली का भी कैंपस खुलने वाला है अबू धाबी में, और IIT खड़गपुर का भी कुआलालंपुर में। So this is it।
कोई इतनी ऐसी न्यूज़ नहीं है कि हमें इसको एनालाइज करना पड़े, बट या इट विल इम्प्रूव आवर रिलेशंस एंड इट विल इम्प्रूव आवर रेपुटेशन ग्लोबली। इससे हमें ये होगा कि इट इज़ अ, आई वुड से कि फाउंडिंग स्टोन। इससे हम और जगह में भी आने वाले टाइम में कभी 10 साल 15 साल बाद यूएस में भी अपने कैंपसेस सेटअप कर पाएंगे, जब हमारी ग्लोबली एक अच्छी इमेज बनेगी। तंजानिया के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तंजानिया में जो एशिया अफ्रीका का सॉरी जो अफ्रीका का the largest peak, a mountain peak, Mount Kilimanjaro, is located there. Lake Victoria, the largest lake, is also located there. Lake Tanganyika, the lowest point of Africa, is also located there, and Lake Nyasa is also located there. Let's see at the map first. This is the map of Africa, and the campus is here, Zanzibar. It is an archipelago, but it comes under the territory of Tanzania only. So it has been set up here. This is Tanzania. It is a very crucial location and it's a very coastal country. This is Lake Victoria. Nile also passes through it. Next thing. सो देयर वाज दिस न्यूज कि यूएस जो है अपने जो लास्ट केमिकल वेपन्स हैं जो उसने वर्ल्ड वॉर 1 में यूज करे थे उन सबको डिस्ट्रॉय करने वाला है, क्योंकि जो केमिकल वेपन कन्वेंशन ट्रीटी है 1997, उसमें ऐसा होता है कि यू शुड बी बैनिंग केमिकल वेपन्स एंड रिक्वायर्स द डिस्ट्रक्शन विद अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो यूएस ने जो कमिट करा था वो सितंबर 30 कमिट करा था, मगर उन्होंने पहले ही इसको इन सबको एलिमिनेट कर दिया है। इंडिया इज ऑल्सो सिग्नेटरी टू इट। जो इसकी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है वो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। इट वाज implemented in 1997. So US has destroyed its last chemical weapons and chemical weapons are banned, and if they are used, there were news कि रशिया और यूक्रेन में भी chemical weapons use हुए हैं, but it was not confirmed by anyone, but it is a violation of international law if you use chemical weapons in there. Next thing is, recently, US has sent cluster bombs. These are banned bombs. These are prohibited by over 100 countries. But यूएस ने कहा है कि हम यूक्रेन की हेल्प करने के लिए इसे यूक्रेन भेजेंगे क्लस्टर बॉम्ब्स को। क्लस्टर बॉम्ब्स क्या होते हैं कि ये कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, एंड व्हेन यू लीव इट इन द एयर, इट just releases into small bomblets across a wide area। तो काफी सारे मल्टीपल टारगेट्स को अगर एक ही बार में आपको मारना है तो ये उसके लिए क्लस्टर बॉम्ब्स यूज होते हैं। बट एज ऑफ नाउ यूक्रेन हैज आल्सो डिनाइड यूजिंग इट, बिकॉज इट वुड बी, क्योंकि क्या होता है कि क्लस्टर बॉम्ब्स जो होते हैं वो ओपन ग्राउंड एरिया में तो सही है, मगर अर्बन एरिया में इफ इट किल्स सम सिविलियन और इट कैन किल एनीवन। तो क्योंकि मोस्ट ऑफ द फाइट्स इन यूक्रेन आर हैपनिंग इन अर्बन एरियाज आल्सो, तो वहां पर यूज करके इट इज आर नॉट अ वेरी वाइबल ऑप्शन। सो यूक्रेन हैज वोड नॉट टू यूज क्लस्टर बॉम्ब्स एज ऑफ नाउ। ऐसा ही छोटा सा ये इस तरीके के स्मॉल बॉम्बलेट्स निकलते हैं इसके अंदर से, जो कि बहुत ह्यूज लेवल ऑफ डैमेज करते हैं। So this is it for now, and I'll be coming up with the very new video very soon for this week's current affair. Thank you for listening.